Hello everyone, welcome to my channel Hindi CBSE Classroom. Please subscribe to my channel and hit the bell button next to it so that you will get notification whenever I post a new video. I have created separate playlist in my channel for each and every class, so please check the description box below and select accordingly. So let's start today's topic. Today's topic is Class 4, Chapter 7, Daan ka Hisab. The estimate of donation. So let's start. Hisab means estimate. Daan means donation. एक था राजा. Once there lived a king. राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे. The king will wear very fancy and very costly dresses, and he'll spend a lot of money on these pricely and fancy dresses. पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी. But when he thinks of donation, or when the time comes on donating some money to someone, he couldn't donate even a single paisa. मुट्ठी बंद होना means he will close his hands. The money won't flow out of his hands when there comes a case of donation. राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे. राज्यसभा means the kingdom. एक से एक नामी, the popular and the highly named people will come and go. लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था. The popular people, that is the kings or the rich people will come and go in the kingdom, but poor, garib means poor, dukhi means sad, vidwan means wise, sajjan means gentleman, won't come at all in the palace. क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था. बिकॉज द पुअर मैन और सैड मैन और वाइज मैन और जेंटलमैन वेर नॉट गिवन इनफ रिस्पेक्ट इन द किंगडम. एक बार उस देश में अकाल पड़ गया. वंस देर वॉज फेमाइन और ड्रॉट इन दैट किंगडम. ड्रॉट मीन्स स्कैरसिटी ऑफ वाटर. पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे. द पूर्वी सीमा मीन्स द बॉर्डर. द पीपल लिविंग इन द बॉर्डर लाइन्स वेर डाइंग बिकॉज ऑफ hunger, and they were dying because of starving and because of no water. राजा के पास खबर आई. राजा गॉट द मैसेज. वह बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. What he said, this is the case that has to be blamed on the God. I have nothing to do with it because God have cursed them. लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें. So they said, please king, please help us from the king's treasure. What he is having, king's treasure, please help us from that. जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकेंगे. So that we can buy food and water from another desho means another kingdom. They can buy food and water from another kingdom and we can survive. जान बचा सकेंगे means we can save our lives. राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है. तो राजा राजा said, today you are saying you are suffering from drought and famine. Next day it will come to know that you have suffered from earthquake. परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं. And day after tomorrow you will tell me that some of them are very poor. 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती. We cannot have meals for two times. 2 time meals we don't have. 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती. इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार ख़त्म हो जाएगा तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा.
So what the Raja is meaning to say is, today you are saying you are suffering from drought, then I'll help you. The next day you will come and tell me that some place has been hit by earthquake, then I have to help you again. Then day after tomorrow you will come to me and you will say that these people are very poor, they cannot even have meal, 2 times a meal, they cannot afford for that. So again I'll have to help for that. If I'll keep on helping you like that, all my treasure, that king's treasure, will get over, then I myself will become very poor. यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए. After hearing his statement, everyone got very upset and they went back. इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था. And in the kingdom, in the drought, that is the drought's condition was getting worse and worse. It was spreading all across. ना जाने रोज़ कितने ही लोग भूख से मरने लगे. There was no control over the figures, how many people were dying daily because of starving, because of hunger. They were dying, many people were dying daily. लोग फिर राजा के पास पहुँचे. Again people came to राजा, that is king. उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई. दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दो तो हम आधा पेट खाकर भी ज़िंदा रह जाएंगे. सो दे केम टू द kingdom and king's palace, and what they said, Maharaja, that is king, we don't want anything, we just want 10,000 rupees from you. We will eat half, we'll eat only half stomach and we will survive. Please help us by giving us 10,000 rupees. राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? What the king said, 10,000 is looking very small amount to you. और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? And what is the use if you can survive with empty stomach or with half stomach? Even if you can survive with that, what is the use in living like this with half empty stomach? यह वह व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं. That person said, with the God's grace, lakhs of rupees are there in your king's or in your kingdom's fund. जैसे धन का सागर हो, as if it is ocean of money. उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? From that, if we take a small bowl or small glass of water, it's like an ocean. You have an ocean, and if we take a small bucket or is a small glass of water, small glass of dhan from it, that is money from it, it won't affect Maharaj at all. So why are you so stubborn? He is asking. राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथ से लुटा दूं? So what the king replied, if I have so much of money in my treasure, so what should I do? I should spend with both of my hands. Using both my hands, should I spend it? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, some another person said, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं. So one another person who was standing in the crowd said, what he said, daily you are spending thousands and thousands of money on these sugandhit means fragrance, clothes, then manoranjan, entertainment and decoration of palace. You are spending thousands of rupees on these decoration items on the palace. यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी. If a little money from those funds can be given to the needy people, they can save their lives. ज़रूरतमंदी means the needy people. यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया. Hearing this, the king got very angry. वह गुस्से से बोला,
he said in anger. खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहा है. You are a beggar and you are giving advice to me. भिखारी means beggar. उपदेश, advice. मेरा रुपया है. It's my money. मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर. It's my money. I can boil and eat it or I can fry and eat it. मेरी मर्जी. That is my will. तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे. If you will talk rubbish like this, you will end up in a very troubled manner. मुश्किल में पड़ जाओगे means you will get in trouble. इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ. That's why you just leave from here without speaking a single word. राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए. Seeing the king's anger, they all went from there. राजा हंसते हुए बोला. The king laughed and said, छोटे मुंह बड़ी बात. Small mouth and big matter. अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था. If they were talking about 100 or 200 rupees, I would have also thought about it. पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता. I would have reduced the wages of my guardmen for 2-3 days and I would have paid them 100 or 200. और रकम पूरी भी हो जाती and the amount would have been sufficient. मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा. But with 100 or 200 rupees they cannot fill their tummies. एकदम 10,000 मांग बैठे. At once they are asking me 10,000 rupees. छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है. Because of these small people, it is very difficult for me to live. यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हो कर कहकर रह गए. Hearing this, the people who were there in the kingdom, so they were like agreeing to the king, saying हाँ हाँ हो like that. They stood there. मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा. But in their mind they were also thinking, राजा ने यह ठीक नहीं किया. The king didn't do this right. ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है. It is the king's duty to help the needy people. So what the king did is not right. 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया. After 2 days, don't know from where, one old sage came to Raj Sabha. Raj Sabha is a place where king does all his meetings and he takes decision with the help of ministers and courtiers. It is like Raja court. उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा. आशीर्वाद means he blessed. He blessed the king and said, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ. सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें. So what he said, दाता कर्ण महाराज, donor Karna king. Karna is a fictional character of Mahabharata who is very famous for his donation mind. So he is calling the Maharaj as he is calling the king as Karna. बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ. I have come from far away place hearing your praise. सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे. Please fulfill this sage इच्छा means wish. Please fulfill this sage wish. अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला. Hearing his praise, the king said, ज़रा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए. First let me know what do you want. यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए. If you ask for little,
I think you can even get. Maybe you will get it. शायद means maybe. सन्यासी ने कहा, The sage said, मैं तो सन्यासी हूँ. I am a sage. मैं अधिक धन का क्या करूँगा? What will I do of this much like more money? I won't do anything. मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ. I want to take a very little amount from the Rajkosh, that is king's treasure, daily. But I want it daily for 20 days. प्रतिदिन means daily. मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है. I'll take the donation according to this rule. What is his rule? मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना. So how he'll take? First day how much he'll take the first day? He'll take the double of it the next day, and the double of it the third day, and fourth day he'll take double of the third day. इस तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ. भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है. Likewise, I'll keep on, you have to keep on doubling my donation bhiksha day by day. This is my way of taking bhiksha. राजा बोला, तरीका तो समझ गया. राजा said, I understood your way. मगर पहले दिन कितना लेंगे? यही असली बात है. But the main point is how much you will take the first day. 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है. If you are willing to take on the first day 2 to 4 rupees, then it will be fine. पेट भर जाए means if your stomach will be full with 2 or 4 rupees, then it's fine. तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी. अला मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी. But if you'll start with 20 or 50 rupees, then in 20 days it will become a very huge amount. बड़ी रकम means huge amount. सन्यासी ने हंसते हुए कहा. The sage laughed and said, महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ. महाराज, I am not greedy. आज मुझे 1 रुपया दीजिए. Today you give me 1 rupee. फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए. Then you give me every day doubling my amount for 20 days. हुक्म means order. You give them order to pay me daily doubling my amount for 20 days. यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई. After hearing this, the king, the minister and the courtiers, everyone was means जान में जान आई means everyone was satisfied. They were feeling okay, only a small amount, so it is fine. राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे. So he gave order to the mantri that the sannyasi, the sage, has to be paid according to his will for 20 days. सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए. The sage, praising him a little more again, went back to his house. राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा. According to the king's order, the Raj Bhandari, that is who maintains the estimate or who maintains the treasure of the Raja, of the king, he daily estimates calculates how much he has to give the sage and he will provide him. इस तरह 2 दिन बीते. 2 days got over. 10 दिन बीते. 10 days got over. 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है.
After 2 weeks, the Bhandari, that is the person who is managing the Raj Bhandar, that is the king's treasure, he started calculating and he found that lot of money is going out of the his treasure. यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी. आफ्टर सीइंग दिस ही गॉट टेरिफाइड. महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते. द किंग वोंट एवर गिव एनी पर्सन दिस मच अमाउंट ऑफ डोनेशन. उसने यह बात मंत्री को बताई. ही सेड दिस टू मिनिस्टर. मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा. आफ्टर थिंकिंग ही सेड टू द पर्सन हु सेड टू द भंडारी, वाकई ये बात तो पहले ध्यान में नहीं आई थी. आई हैव नेवर नोटिस दिस थिंग टिल नाउ. मगर अब कोई उपाय भी नहीं है. बट देर इज़ नो अदर वे ऑल्सो. महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता. वी कैनॉट चेंज द किंग्स ऑर्डर, सो देर इज़ नो वे आउट. इसके बाद फिर कुछ दिन बीते. आफ्टर दिस सम मोर डेज अगेन वेंट बाय. भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया. द भंडारी गॉट वेरी वरीड एंड ही वेंट टू द मिनिस्टर and he showed him the whole calculation and the whole estimate. हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया. After seeing the estimate or after seeing the calculation, the minister got very terrified and he got very scared. फीका पड़ गया means he got very scared. वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला. He wiped his sweat, then scratched his head. सिर खुजलाना means scratched his head. दाढ़ी में हाथ फेरते हुए, waving his hand on his beard, he said, यह क्या कह रहे हो? What are you saying? अभी से इतना धन चला गया? Till now this much money has already gone. तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपये होंगे? So after 20 days what will be the amount? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है. द भंडारी सेड, जी मीन्स गिविंग रिस्पेक्ट, ही सेइंग, जी आई हैवंट डन द होल कैलकुलेशंस. मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो. देन यू सिट डाउन इमीडिएटली एंड डू ऑल द कैलकुलेशंस. भंडारी हिसाब करने बैठ गया. द भंडारी स्टार्टेड डूइंग द कैलकुलेशंस. मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेज़ी से पंखा झलवाने लगे. सो द मंत्री, दैट इज़ मिनिस्टर, गॉट वेरी वरीड एंड स्कैर्ड एंड ही गॉट हेडेक इट सीम्स. सो व्हाट ही डिड, अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी. सो ही केप्ट आइज बैक ऑन हिज फोरहेड बिकॉज ही वॉज फीलिंग सो टेंस्ड एंड आस्क्ड देम टू swing the fan in high speed. कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया. In a short span of time, the Bhandari did the whole estimate and or whole calculation. मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? What is the total amount? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा. He said with folding both his hands, he said, जी 10,48,500 रुपये और 75 रुपये. 10,48,575 रुपये. 10,48,575, he said. मंत्री गुस्से से बोला, मजाक कर रहे हो? द मंत्री said in a angry voice, Are you kidding? Are you joking around? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा. If we'll pay this much amount to sage, then our rajas, that is then our king's treasure would be empty. भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए. भंडारी said, Why would I joke? You see the calculation yourself. यह कहकर उसने हिसाब का कागज़
मंत्री जी को दे दिया, saying that he handed over the calculation sheet to the minister. हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया. After seeing the calculation, the minister started fainting. हिसाब तभी सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए. All of them holded him and with great difficulty they took him to the king. राजा ने पूछा, क्या बात है? राजा asked, what is the matter? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है. Minister said, King, the Raja's treasure is going to get empty soon. राजा ने पूछा, वह कैसे? राजा asked, how? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है. King, you have given orders to donate or to pay the donation to the sage. मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है. But now only we came to know that he have made a plan of taking 10 lakh rupees from the Raj's treasure. राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था. राजा said in an angry voice, I didn't order you to give this much money to the sage. फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? Then why are you paying this much money? भंडारी को बुलाओ. Call the भंडारी. मंत्री ने कहा, The minister said, जी, सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है. राजा, so मंत्री said, King, everything is going according to your orders only. आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए. You can see yourself the estimate of the donation. राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गए. राजा saw it once, twice and after that he also fainted. काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े. After so much efforts, finally he came to his conscious and then everyone went to call the sage. सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा. When the sage came, the Raja crying fell on the sage's leg. बोला, fell on the sage's feet. He said, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए. I am very sorry, सन्यासी, that is sage, don't kill me like this. जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए. प्लीज़ डू समथिंग एंड प्लीज़ मेक मी फ्री फ्रॉम दिस वचन. वचन इज प्रॉमिस. अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा. फिर राजकाज कैसे चलेगा? If I'll keep on paying you like this for 20 days, then my treasure will be empty. Then how can I do all the kingdom's work? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा. सन्यासी in a heavy tone said, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं. In this kingdom, people are dying because of the drought. मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए. I want only 5,000 rupees for them. वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है. If I receive that much amount, I'll be happy and I'll think that I have got my whole donation. राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे. सॉरी, ही सेइंग 50,000, 50,000, दैट इज़ 50,000. राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था
कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे. King said, still he is greedy. So he is telling that, but one day one person came and he said, for all the people 10,000 will be enough for them. The sage said, सन्यासी said, सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 में एक पैसा कम नहीं लूँगा. So the sage said, but today I am saying I won't take a penny or a money पैसा less than 50,000 rupees. राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए. राजा got panicked, minister panicked and everybody panicked. मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा. They also requested him. Raja also requested him. Minister also requested him. Everyone requested him. But the sage stayed on his word. आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची. At last, with great difficulty or with great sorrow, the king had to pay the sage 50,000 rupees from the treasure. Then only he could save his life. पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं. सो पूरे देश में, दैट इज़ द होल किंगडम, it spread, a rumor spread that because of the drought, the king has paid from his Raj treasure 50,000 rupees. सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं. So everyone said, our king is just a great donor, just like Maharaja Karna. So that is the story all about. So there lived a king who was very greedy and he was very miser in spending money in case of donation. The people in his kingdom were suffering from drought. Then too, he didn't give a single penny for them to survive. But one day a sage came and he asked for donation from him, starting with 1 rupees, and it should be doubled on each and every day, and he should be paid for 20 days. So the Raja agreed, as he thought the sum will be very less because it's starting from 1. But when the Bhandari did the calculation, it came up to around 10 lakhs. When the minister and Raja got to know about it, they panicked and they called the sage. What the sage said, okay, I know I have tricked you, but I want 50,000 from the king's fund. The Raja, that is the king, requested him to decrease the amount, but the sage didn't agree. He he demanded 50,000 rupees from the king. At last, the king had to hand over him 50,000 rupees. But the sage never mentioned this story to the kingdom. Then what happened? The people all across the kingdom thought that the king had paid them himself 50,000 rupees, and they believed that their Raja is also a big donor like Maharaja Karna. So that is the story. The story is written by Sukumar Rai. Hope you understood the chapter. Thank you. Don't forget to subscribe my channel. Bye bye.